Objective evaluation. It can be done by objective testing. It means the test which may involve the varying degree of equipments because it gives you the results of a very minute and delicate with very minute and delicate readings. They may be very authentic as compared to sensory evaluation. So, by applying these objective techniques, one may be able to attribute of a food as rheological properties, its tenderness and volume. For objective evaluation, the general guidelines are, as we all know that objective evaluation will always give researcher a feeling of security. Why the researcher feels secure? Because the data that the researcher is extracting is from a device which has some authenticity. While in sensory evaluation, since it is depending totally on the human senses, the results may vary. But for these numerical values that the device gives us remains same if the same sample is tested again and again. So a researcher um, may vanishes their doubt about the results of the product which he is going to assess. So even अगर सेंसरी मेजरमेंट हो भी गई है तो ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग makes that assessment complete by checking the other parameters such as pH. So the objective testing is always an essential asset in evaluating the data. Obtain necessary testing devices because not all devices are appropriate for every kind of food. तो कोई भी एक फूड जो हम टेस्ट करते हैं जिसको हम ऑब्जेक्टिवली टेस्ट करते हैं मे बी उसके लिए हमें कोई और डिवाइस उसके फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक दूसरी डिवाइस की भी ज़रूरत हो. So there should always be an opportunity to develop a new device to determine the quality of food. तो बहुत सी लेबॉर्ट्रीज हैं जो इंस्टीट्यूशंस हैं चाहे वो यूनिवर्सिटी के लेवल पर हो चाहे वो किसी प्रोफेशनल जो है वो लेवल पर हो. There should always be a margin to produce new devices, and if once the devices are made, their technical staff should be there to teach the usage of those devices. So a lab that is well equipped with the objective devices, the lab should take care the personals who are responsible to take care of the devices should maintain its services. उसमें क्या क्या आ जाता है उसमें उनकी जो भी अगर वो बहुत ज़्यादा डिवाइसेस को मूव किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू वन अदर तो उनकी जो फंक्शनिंग है वो इफेक्ट हो जाती है. So the mechanical failures can occur, and for that the checking and the lubrication of the particular device should be done. The service that may be due should be done prior, और जो भी उसके operational functions हैं वो well maintained हो before the final product is going to be analyzed. So बहुत ज़्यादा इन devices को अपनी place से move करना या उनको जो है एडजस्टिंग जो उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको किसी अनट्रेन पर्सन के हाथ में देना जो उसकी प्रोग्रेस जो उसकी आप कह लें कि मेंटेनेंस है उसकी जो ड्यूरेशन है वो स्पीडीली बढ़ जाती है जितना वो जो ऑपरेटर्स है जो डिवाइस है वो एक्सपर्ट पर्सनल्स के हाथ में रहते हैं उतनी ही उसकी मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है और फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाती है. The samples to be tested objectively should be defined because not one equipment is useful for all. A template is an essential tool in obtaining the comparable samples, right? And when you are going to test the your food, you have to make it sure that it is really close to the its original form. जैसे कस्टर्ड पे यूजुअली आफ्टर सम टाइम उस पर एक थिक लेयर फॉर्म हो जाती है तो सो दैट थिक लेयर शुड बी रिमूव फ्रॉम
टॉप ऑफ द कस्टर्ड। इसी तरह जो और भी टेस्टिंग करने के लिए फूड्स होते हैं उनको उनके ओरिजिनल फॉर्म में होना ज़रूरी है। Dimensions of pastry or cookie sample are being tested for tenderness by shortometer. So whenever you are going to test the food, its an original form must be there, and the proper selection of the objective device should be used. Establish operating conditions for objective testing. So in obtaining the results, there must be no variations in the collection of objective data. ये नहीं कि आपने एक ही सैंपल के जो हैं वो डिफरेंट वेरिएंट्स ले लिए हैं और आप उनसे सेम रिजल्ट्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टेम्परेचर हो, चाहे उसका साइज हो, चाहे उसकी स्टोरेज टेम्परेचर हो, they all should remain controlled when you are to apply the objective testing.